Okay, in the last class we are discussing about speech problems. Okay, so before looking into some of the cases, let us have an approach to language delay. Okay, some of the factors are already discussed in the last class. Last class में कुछ हमने discussion किया था. फिर भी just for a refresh, we'll again go back. Now suppose if a child comes to OPD with the suspected language delay, एक बच्चा आएगा जिसको suspected language delay है. So first thing what you have to do is you have to do the hearing assessment, because we know receptive delay, expressive delay ये सब हमें पता है. तो सबसे पहले जो है उसको सुनाई पड़ता है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है. So do the hearing assessment and also the developmental assessment. Two things are very important whenever a child comes with the language delay. पहले तो utmost है, common sense है कि पहले ये टेस्ट करो कि उसको सुनाई पड़ता है कि नहीं. Then see the other developmental aspects. Okay. Now another important is look at whether this is an isolated delay or global delay. Next point जो आपको देखना है कि whether it is only a problem with the speech or whether he has got problem with the other domains also. He has got social problem, he has got gross motor, lingual, etc. Okay. So now if it is isolated delay or if it is global delay, then you have to screen for autism. Suppose now this is a problem. It may be a case of isolated delay, for example language delay, or it may be a case of global delay. Okay, like language is also gone, social is also gone, okay, some cognitive function is also gone. Whatever may be the case, you have to screen for autism, because autism not only with the language delay, it is also there with the social delay also, and some other problems may be also there. So as far as autism is concerned, कोई भी डिले आ जाए आपको ऑटिज्म के लिए स्क्रीन करना ही है. नाउ इफ आइसोलेटेड डिले एंड यू आर स्क्रीनिंग फॉर ऑटिज्म एंड इफ दैट इज नेगेटिव फॉर ऑटिज्म, ऑटिज्म स्क्रीनिंग के लिए वी हैव गॉट यम चार्ट. ठीक है, जो क्वेश्चनरी से है यम चार्ट वाला, सो दैट्स द बेस्ट वे. ओके, सो नाउ इफ इट इज आइसोलेटेड डिले एंड यू आर स्क्रीनिंग फॉर ऑटिज्म बट इट इज नेगेटिव, so then it may be a speech production problem or language problem. Now this is how you have to approach. Isolated delay is only related to language. Now you have a doubt that it may be autism. So आपने autism के लिए screen किया, but वो negative आ गया, but speech delay है उसको. So क्या हो सकता है ये? So this may be a speech production problem or it may be a language problem. Okay, if it is not autism, the next step is it may be a speech production का problem हो सकता है या language formation या language function का problem हो सकता है. And if it is speech production problem, suppose if it is speech production problem, then the problem may be there in the articulation, है ना, words को जो है join करने में problem है, और problem may be there in the fluency, और problem may be there in the voice, aphonia, stuttering, dysarthria. Okay, so but step क्या है कि पहले आपको autism को exclude करना पड़ेगा. First you exclude autism and then come back. Okay, so in the beginning itself don't decide that this is a speech problem. Okay, now if it is a language problem, suppose child is not having any autism, child is not also having any speech production problem, but child is having some language problem. Communication, language, speech, what is the difference we have seen? Language may be verbal or non-verbal, language may be receptive or perceptive. So if it is a language problem, then you have to see whether it is an expressive problem, receptive problem, mixed problem, or social communication problem. Okay, social communication problem. Now language problem है तो क्या है कि उसको expression करना नहीं आता है language को, ठीक है, या receptive है कि उसको सुनाई नहीं पड़ता इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है. Okay, or it may be mixed, it may be both, or it may be social communication problem. He has got everything right, but he has got problem when he is moving in the society. So that you have to exclude. Now if there is a positive risk, any conditions, if there is any risk, if you find out, then you have to do the intervention for autism. Okay, this is one step approach. Now if the problem is global delay, suppose selective delay है तो हमने देख लिया क्या क्या करना है. प्रॉब्लम उसको ग्लोबल डिले है, सोशल भी गया है उसका, लैंग्वेज भी गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम है उसको.
ठीक है. Then screens for autism, and if it is positive for autism, okay, then look for the etiology. Then you have to look for the etiology. For this you have to go for MRI, EEG or some of the chromosomal studies. ठीक है. पेशेंट इज हैविंग ग्लोबल प्रॉब्लम, उसको बहुत सारे डोमाइंस अफेक्टेड है, स्पीच भी अफेक्टेड है, सोशल भी अफेक्टेड है. ओके, सो नाउ गो फॉर ऑटिज्म स्क्रीन. दिस इज मस्ट फॉर ऑल द किड्स. यू हैव टू गो फॉर ऑटिज्म स्क्रीन, एंड इफ इट इज पॉजिटिव फॉर द ऑटिज्म, then you have to look into the cause why this autism is there. Okay, it may be sometimes chromosomal problems, for example Rett syndrome. Okay, it may be Rett syndrome as occurs in case of female में होता है, ठीक है, or it may be because of some other problems. So therefore you have to go for MRI, EEG, etc. Okay, now in the history, in such conditions you have to take the proper history. History में क्या पूछेंगे? Look for the birth history, very important. Now when there's a birth history, if there's a global significant birth asphyxia का history है, significant है, so all the domains are affected. Okay, so in that social and language is also affected, and along with other symptoms child is also having autism. ठीक है, तो mental retardation भी है बच्चे को और autism भी है, differentiate करना बहुत मुश्किल है, isn't it? So now look for the history, birth history, prematurity. Now prematurity is very important. ओके, वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वगैरह दिया है क्या? कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, हर्पेस, ओके, रूबेला. देन क्रिटिकल हाइपरबिलिरुबिनिमिया, कर्नेक्टरस का हिस्ट्री है क्या? सेप्टिसीमिया, हिस्ट्री ऑफ सेप्टिसीमिया, मैटरनल ड्रग एब्यूज, एक्सपोजर टू टेराटोजेंस. सो दिस हिस्ट्री हाउ टू टेक व्हेन यू डोंट फाइंड एनी कॉज. ठीक है, नाउ गो फॉर द. So suppose if the child is having autism, along with the other domains are also affected, you have to find out the cause. So cause पूछते पूछते आपको history पूछना है, तो history में ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा. Now look into the developmental history. Whether child has got feeding difficulties. Suppose child has got the feeding difficulties from the beginning itself. अभी मान लो बच्चा आपके पास आ गया 2 साल में, आपको हिस्ट्री में, डेवलपमेंटल हिस्ट्री में पूछना चाहिए कि फीडिंग डिफिकल्टी है क्या. So if there is a feeding difficulty, there may be some problem related to the oral cavity, pharynx, larynx, muscles. Okay, then hearing and level of comprehension. बच्चे को सुनाई पड़ता है क्या, और जो सुनने के बाद कितना लेवल तक वो समझ लेता है उसको. ओके, कॉम्प्रहेंशन. देन व्हाट अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड, वेदर इज चाइल्ड इज रेस्पॉन्डिंग फॉर नॉन वर्बल, तो नहीं बोल रहे, छोड़ो, नॉन वर्बल तो कर रहे हैं क्या, इशारों को समझता है क्या. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट यू हैव टू आस्क. देन स्पोकन लैंग्वेज, then play, social communication, behavioral problems. These are the different things that you have to ask in the history whenever a child comes to you with these problems. Speech का problem है जब आता है, तो ये सभी history वैसे तो हम लेते ही है. So this history has to be taken. Medical history. In the medical history, what is important? You have to ask the recurrent ear infections. Now one of the most common cause for maybe for the speech problem is the recurrent ear infections. Okay, so that may affects the auditory apparatus. Okay, therefore he has got problem in listening or hearing. ठीक है, and that may be the cause. Then meningitis, encephalitis, brain injuries, etc. Family history has to be taken. Family, some of the familial problems may be there, congenital problems, so they may be also the cause of language delay. And most of the time when you come with the stuttering, जब बच्चे आते हैं stuttering के, and if you are looking into the family history, definitely you get a family history. जो father या mother जो बच्चे का कंप्लेंट बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा सही से बात नहीं करता है, और जो हमको बोल रहे हैं ना वो कि मेरा बच्चा, तो तभी आपको देख सकते हैं वो खुद जो है तुदला. Many times you get such cases in OPD. Okay, so that means a familial tendency is there. Maybe some of the familial disease may be also there. Okay, this also I think we have covered by the red flags of language delay. सो लैंग्वेज डिले, रेड फ्लैग्स क्या है? 1 साल तक अगर बच्चा कोई भी बैबलिंग साउंड नहीं करता है, देयर इज नो गेस्चर्स, नो रेस्पॉन्स टू कॉलिंग द नेम, देन दिस इज अ रेड फ्लैग. एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ 1 ईयर जब बच्चे का नाम आप बुलाते हैं, कम से कम कुछ तो वो देखना चाहिए उस तरीके से. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप एक बार नाम बुलाओ, मदर से आप बोलो कि इसका नाम बुलाओ, देखो उसके बाद वो देखता है कि नहीं. कोई ना कोई एक मूवमेंट तो चाहिए, कम से कम आंख का मूवमेंट है या चेहरे का मूवमेंट है, जो भी है, टुवर्ड्स दी साउंड.
At 1.5 years, if there is no words and no pointing and no response for the simple commands. 1.5 years हो गया. Now we expect at least bisyllables. है ना, bisyllables should be completed and there should be one meaningful word, at least one meaningful word by 15 months or 1.5 years. And there is no pointing of the objects. ठीक है. So आपको क्या चाहिए, बोल तो नहीं पा रहे बट वो इशारों में तो कर सकता है, बट वो भी अगर नहीं है, yes, this is a red flag. Okay, he is not responding for the simple commands, आ जाओ, जाओ, बैठो, no response at all. That means he is not receiving your signals. Okay, by the age of 2 years, if there is no joining of two words, 2 साल हो गया और 2 वर्ड्स को जो है बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, पापा आया, मम्मी गया, बाई कहाँ, सो इस तरीके से एटलीस्ट ही हैज़ टू ज्वाइन 2 वर्ड्स by the end of 2 years. Now if it is not there, this is a red flag. Cannot follow the simple commands. Yes. Now by 3 years, speech not understood by the parents. Now 3 साल हो गए, 3 साल में भी जो बच्चा बात कर रहा है और कोई समझ नहीं पा रहा है, माँ बाप तो समझना चाहिए कम से कम, और किसी को भी समझ में नहीं आया तो, बट वो भी समझ नहीं पा रहा है क्या बोल रहा है. दैट मीन्स बैबलिंग इज गोइंग ऑन, अभी भी उसका बैबलिंग ही चल रहा है. ठीक है. सो एंड नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस and cannot follow the 2-step command. At least by 3 years, 2-step command, I think you know 2-step command. उधर जाओ और वहाँ पे उसको उठाओ. This is 2-step command. जाके वहाँ पे बैठो और पेन नीचे रखो. 2-step command. So by the end of 3 years, baby has to do this. Okay. Now 4 years, speech less than 50% intelligible and 3-word phrases. 4 साल में बच्चा कम से कम उसका एक सेंटेंस में 3 मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए मिनिमम. वैसे तो 4 होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए. डिफिकल्ट इन वर्ड फाइंडिंग एंड फ्रस्ट्रेशन. देन बाय 5 years, स्पीच अंडरस्टूड बाय द टीचर्स, सिंपल सेंटेंस, डिफिकल्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, डिफिकल्ट इन टेलिंग द स्टोरीज, फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा. नाउ 5 years, स्पीच नॉट अंडरस्टूड बाय द टीचर्स. टीचर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा क्या बोल रहा है. ओके. देन सिंपल सेंटेंस नहीं बना पा रहे वो. डिफिकल्टी इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर्स और बच्चा नहीं बोल पा रहा. सो दीज आर ऑल एक्चुअली द रेड फ्लैग साइन. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल whenever you find such cases. Intervention also I think we have seen in the last class. 0 to 5 months में क्या करना है, सिंगिंग, मास्किंग द फेसेस, किस तरीके से जो है उसको, उसका लैंग्वेज डिले है, स्पीच डिले है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और यू कैन एटलीस्ट आइडेंटिफाई इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. ठीक है. तो 0 to 5 months में बच्चे के कंटिन्यूसली बच्चे के साथ आप गाते रहो. ठीक है. लोरी वगैरह जो भी सुनाते हैं तो उसमें जो है सो बच्चे का रेस्पॉन्स क्या है, सो दैट यू कैन सी इफ द बेबी इज हियरिंग, गिविंग सम कमांड्स और गिविंग सम रेस्पॉन्स, स्माइल कर रहा है, तो इसका मतलब है आपका गाना जो है वो एंजॉय कर रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स एट द अर्लीस्ट. ठीक है. एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट. ओके. देन 6 to 12 months, pointing at an object and naming them. So this we have already seen in the last class. Now another intervention is remediation. This is also we have seen in the last class. So now we will look into some of the important cases so that you can understand this